I hope you all are fine. Today I'm going to discuss the psychological foundation of guidance. Psychology. Firstly, let me tell you what psychology is. Psychology, it has also the Greek derivation. It has been derived from two Greek words, that is psyche and logos. Psyche stands for soul and logos stands for study. So we can say etymologically, psychology means the study of soul. But who has coined the term study of soul? It was Aristotle. I'll write it here. Aristotle, the Greek psychologist, or you can say the Greek scholar, who started firstly the concept of soul. He was the disciple of Plato. He started the term soul. According to him, there should be the subject which studies the soul. But unfortunately, he failed to prove the connection of soul to the body. He did so many experiments, but he cannot show the connection of body to the soul. So on that basis, it has been discarded. Means the definition of a study of soul of psychology has been discarded as he was failed to prove the connection of soul with the body. Then comes Rudolf Joykel. Rudolf Joykel was another Greek scholar. Rudolf Joykel. He was another Greek philosopher who started the study, or who said that psychology should be the study of mind. I'll write it here. Rudolf Joykel said psychology should be the study of mind. But it was also difficult to study the mind of each and everyone. Means it needs the experts who can read the mind of a person. We can read somehow the mind of a person, but how can we read the mind of an animal? So on that basis, it was not suitable to each and everyone. All the humans doesn't fall in this. So in this study, so it has been discarded that it is not suitable, on the basis that it is not suitable to every human. So this definition has also been discarded. Then comes another definition, that is study of body. Another psychologist says that it should be the study of body. Study of body. And who has given this definition? It was William James. William James was the philosopher, a psychologist, who said in his book, Physiological Psychology, he wrote it, Physiological. He wrote a book, Physiological Psychology, in the year 1902. In this book, he said it should be the study of body. Means, according to him, psychology should be the study of body. But uh, it was not suitable to each and everyone. Like, what should we study about the body? So that this definition also doesn't work. So it has been also discarded. Finally, it was J.B. Watson who gives it final shape. J.B. Watson said that there should be the study of behavior, as we can study the body. I mean to say, biological system we can study every subject, like social behavior, we can study everything, but there should be a particular subject we should at least study the behavior of everyone. So finally he said, J.B. Watson said psychology should be the study of behavior. And this is the final definition of psychology. Today it is considered as the study of behavior. Now, let me tell you a little bit about the behavior. What behavior is? We can usually say behavior is the reaction of a particular person towards a particular situation.
So, according to J.B. Watson, we should study the behavior of a person. So, what should be the behavior? Behavior should be the reaction of a particular person towards a particular situation. So, with this definition, it has been finalized that psychology should be the study of behavior. Now, in guidance, how psychology helps the guidance and how it is important that we should provide psychological guidance, or we should provide guidance, we should have psychological base. So, as you all know, psychology is the study of behavior. So, if we study psychology, that includes not only the study of behavior, but it includes the knowledge of soul as well. So, in order to understand the human behavior, we need to provide a psychological foundation of guidance. So, because man does not live in vacuum, he lives in a society. He is compelled to live in a society. He cannot live in isolation. So, there he falls the victims of various kinds of problems, from the cradle upon the grave. If he is not guided and prepared to face the problems, he will develop disintegrative behavior, or you can say unacceptable behavior, which should be not accepted in the society. And he cannot enjoy social acceptance. So, with this purpose of thought, we should provide the guidance. We should have at least psychological base, or we can say we should provide psychological guidance in order to solve the personal or psychological problems of a person. So, psychological foundation of guidance are essential because of the following reasons. Let me tell you those reasons. First, why is it important? It is important because of physical dimension. Physical dimensions. Why we need psychological guidance? Because of these reasons. The first reason is physical dimensions. Physical dimension includes defects, various defects, you can say, which we have physically usually. Few persons have physical defects, like some have visual defects, you all know. Some have hearing defects, some have nose defects, or you can say throat, or some chronic diseases few persons have. So, when a person is having visual defect, we cannot consider him as normal, because there he can develop an inferior feeling आ जाएगी कि आई एम नॉट लाइक अदर्स, क्योंकि उसमें विजुअल प्रॉब्लम होती है, वो नॉर्मल पर्सन्स की तरह यूज नहीं कर सकता अपने विजुअलाइजेशंस को. सो वहाँ पे वो एक इंफीरियर कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है, डेवलप करता है अपने अंदर. सो इन ऑर्डर टू रिमूव द इंफीरियोरिटी, or in order to provide special guidance to them, so that they can also live the life fully, they can also develop fully. So we should provide them psychological guidance. जब हम psychologically उनको treat करेंगे, psychologically उनको guide करेंगे, so they can be able at least to survive normally, at least they can develop fully. So with this problem, we need the psychological guidance. Then comes second, that is mental dimension. Second is mental dimension. Mental dimension. Here you all know we have categories. No individual are alike. कोई भी इंडिविजुअल जो है सिमिलर नहीं होता है. एवरीबडी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हमारी मेंटल कैपेबिलिटी जो है वी डिफर फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि वी हैव कैटेगरीज. हम में कोई होता है सुपीरियर इंटेलिजेंट, कोई होता है नॉर्मल इंटेलिजेंट. लाइक वी हैव पर्सन्स हु हैव सुपीरियर इंटेलिजेंस. लाइक सुपीरियर इंटेलिजेंस में क्या कैटेगरी आती है? सुपीरियर इंटेलिजेंस मीन्स दोज हु हैव 140 IQ, मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. लेकिन on the same way we have normal intelligence as well, those who have 90 IQ only, जिनके पास खाली 90 IQ होता है. यानी जो 140 की कैटेगरी में आता है वो सुपीरियर इंटेलिजेंस होता है उनका. कुछ होता है नॉर्मल IQ पे, कुछ होता है हमारे यहाँ पे बिलो 90 पे, मीन्स डल, और यू कैन से इंस्पायर. सो इंस्पायर जो होता है वो बिल्कुल डल लेवल पे होता है. अब आप कैसे इनको कंसिडर करोगे इक्वली? क्योंकि सुपीरियर इंटेलिजेंस वाला जो है
उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेन डेवलप्ड होता है, उसमें इंटेलिजेंस लेवल हाई होती है, सो ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बाय हिमसेल्फ क्विकली, ही कैन लर्न क्विकली। बट नॉर्मल वाला जो है इट ही विल टेक टाइम, सो वी कैन नॉट कंसिडर बोथ द पर्सन्स इन अ सेम कैटेगरी। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, अलग अलग टाइप्स से पर्सनालिटी होकर अलग अलग इंटेलिजेंस को मद्देनजर रखते हुए हमें उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। क्योंकि जो सुपीरियर इंटेलिजेंस वाले होते हैं इनके लिए भी सर्वाइव करना सोसाइटी में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इनको मिलना चाहिए, जो इनके नीड्स होता है, जो इनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उस हिसाब से इनको नॉलेज मिलनी चाहिए। सो इनको वैसे गाइड करना है, क्योंकि इफ ये अगर एक नॉर्मल क्लास में होंगे सो वहाँ पे फुली हम इनको फोकस नहीं कर सकते, बट ऐसे हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं गाइडेंस जिससे नॉर्मल भी उसमें फॉल हो और उसमें जो है बिलो नॉर्मल भी फॉल हो। सो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फिर से क्रिएट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल अपने आप को सुपीरियर की कंपेयर में नहीं करेगा, सुपीरियर अपने आप को नॉर्मल से कंपेयर नहीं करेगा। सो इन दैट केस एवरीबडी नीड्स द गाइडेंस, उनकी आईक्यू बढ़ाने के लिए भी और उनको सर्वाइव करने के लिए भी नॉर्मली। सो यहाँ पे मेंटल डायमेंशंस को देखकर भी we need to provide the guidance which should be based on psychology. So here the psychological foundation of guidance plays the role in mental dimension also. The next is that is emotional dimension. This is the most important dimension where we need the psychological guidance. Emotional dimension means we have to deal with so many emotional problems like emotions. We can say it's a joy, it's aggression, it's hatred, it's love. Every emotion जो इंसान के इंटरनली होती है, जो लाइक हमें कुछ नीड्स होती है, नेचुरल नीड्स। जैसे सिगमंड फ्राइड ने इसको इमोशनल डायमेंशन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वी हैव टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल गाइडेंस स्पेशली टू द एडोलसेंट स्टूडेंट्स, एडोलसेंट पीरियड चिल्ड्रन, बिकॉज वहाँ पे वो लोग जो है सबसे ज़्यादा नीड होती है उनको साइकोलॉजिकल गाइडेंस की, क्योंकि वो इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं एज बिकॉज ऑफ देयर सेक्सुअल नीड्स स्पेशली। वहाँ पे दे कैन नॉट कंट्रोल देयर अर्ज, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर डिज़ायर्स, एंड अगर हम उनको प्रॉपर गाइडेंस ना करें सो वहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी जो है वो फॉल्टी डेवलप हो जाएगी, उनकी पर्सनैलिटी जो है वहाँ पे पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाएगी और वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम उनके नीड्स को टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाए या फिर अगर हमने उनको बाकायदा गाइडेंस नहीं दी टाइम टू टाइम, सो वो क्या होता है, या तो आप लोग को पता ही है वो क्रिमिनल्स बन जाते हैं या फिर ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल न करते हुए वो कमिट करते हैं सुसाइड भी। सो इन ऑर्डर टू उनकी लाइफ एक स्मूथ चले तो वी नीड टू प्रोवाइड देम गाइडेंस, और वहाँ पे जो है साइकोलॉजिकल गाइडेंस का मेन अहम रोल है। सो वहाँ पे इमोशनली वी हैव टू गाइड देम, वी हैव टू कंट्रोल देयर इमोशंस सो दैट कि वो प्रॉपरली ग्रो कर पाए और उनकी पर्सनैलिटी जो है प्रॉपरली ग्रो हो जाए। थैंक्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट